Hello, dear aspirant. Welcome to our YouTube channel. I am Jiten Singh, faculty of Creative Age. And in this session, we will be discuss JEE B.Arch 2024 paper analysis. So let's start the session. So सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर करिए कि भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है कि भाई JEE B.Arch जो कि 24 जनवरी 2024 सेकेंड हाफ में हुआ था, जिसको हम बोलते हैं पेपर 2A। सो उस पेपर 2A का मैं कंप्लीट एनालिसिस करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूंगा आपका एप्टीट्यूड पार्ट्स, एंड देन आफ्टर दैट ड्राइंग पार्ट्स के लिए राजेंद्र सर डिस्कस करेंगे सारी चीजें। सो स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को कि भाई पेपर का लेवल क्या था, उसकी डिफिकल्टीज क्या क्या थी, कि भाई मॉडरेट था, इजी था, इसके बाद किस टाइप के प्रॉब्लम्स थे, क्या पैटर्न में कोई चेंजेस था, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो आई होप सभी को हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ना। ओके, सो हेलो बाबूलाल शर्मा जी। सो नाउ स्टार्ट द सेशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूं कि भाई जेई मेन क्वेश्चन JEE Main BR question paper 2024 for admission Bachelor of Architecture BR course, the NTA National Testing Agency conducted JEE Main session 1 paper 2A। okay, so now ये जो पेपर है जनरली उसको हम क्या बोलते हैं, पेपर 2A। ये सेशन 1 है, सेशन सेकंड बाद में होगा। नेक्स्ट इसको बाद हम बोलते हैं 24 जनवरी 2024 को ये कंडक्ट हुआ था। आपका टाइमिंग था इसका 3 PM to 6:30 PM। ओके, सो हम बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल। जो पेपर था वो आपका इजी टू मॉडरेट मैं बोल सकता हूँ, इजी टू मॉडरेट। और एग्जाम कंसिस्ट अगर मैं बात करूँ तो 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज मैथमेटिक्स, सेकंड इज एप्टीट्यूड एंड थर्ड वन इज ड्राइंग। ओके, सो जो पेपर पार्ट 1, सो पार्ट 1 कंसिस्ट अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का भी 2 पार्ट्स था आपका, एनईटी एंड है ना एमसीक्यू। सो अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स, मैथ्स के भी अगर पार्ट करूंगा, मैथमेटिक्स में 30 प्रॉब्लम्स थे। 30 में था आपका 10 प्रॉब्लम जो थे वो एनईटी, और 20 जो प्रॉब्लम थे वो एमसीक्यू। और हमें जो ऑलरेडी ओनली 25 सॉल्व करना था। कितना करना था? 25, ईच कैरी 4 मार्क्स, यानी टोटल 100 मार्क्स। फिर था आपका एप्टीट्यूड। अगर मैं बात करूं एप्टीट्यूड में यहाँ पर 50 प्रॉब्लम थी और ईच कैरी 4 मार्क्स, यानी 200 का एप्टीट्यूड था। और उसके बाद आपका 100 मार्क्स का ड्राइंग था। ओके, सो 100 मार्क्स का आपका क्या था? ड्राइंग, यानी टोटल 400 सही, 400 का आपका जो वेटेज था आपका। सो ये जो पार्ट ए, यानी पार्ट ए में मैं बात करूं एप्टीट्यूड एंड मैथ्स, ये था आपका कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी। और सेकेंड पार्ट जो था आपका जिसको बोलते हैं हम ड्राइंग, ये की ऑफलाइन था, A4 साइज पेपर पर आपको ड्रॉ करना था। ओके, सो ना मैं पेपर एनालिसिस करता हूं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन, अपना जो एग्जाम गया है उसको चेक कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स था वो इजी टू मॉडरेट था। अगर मैं यहाँ बात करूं गुड अटेम्प्ट, ठीक है, कि गुड अटेम्प्ट जो है आपका वो 15 to 20। अगर कोई पर्सन 15 to 20 करता है तो उसने अटेम्प्ट अच्छा किया है। 15 to 20 गुड अटेम्प्ट। नेक्स्ट एप्टीट्यूड की बात करूं तो आपका 45 या 40 to 45, 40 to 45 ये आपका गुड अटेम्प्ट है। मतलब इतना आप अच्छा करते हैं तो ये आपके लिए बेटर होगा। फिर नेक्स्ट आपका अगर मैं बात करूं ड्राइंग, ये भी आपका इजी था। एप्टीट्यूड आपका इजी टू मॉडरेट। बस इस बार एप्टीट्यूड में क्या किया उसने, पेपर पैटर्न चेंज किया। ओके, क्या किया? पेपर पैटर्न चेंज किया। सो मैं बात करता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एनालिसिस करूंगा सब्जेक्ट वाइज वेटेज। मैथमेटिक्स की बात करूंगा सब्जेक्ट वाइज वेटेज मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में जो एक मैंने वीडियो किया था, आप चाहो तो देख भी सकते हो इसको, आपको क्रिएटिव एज है ना वाईटी यूट्यूब चैनल पर आपको दिख जाएगा, जिसमें मैंने बोला भी था कि लास्ट मिनट में आपको क्या फोकस करना है। तो मैंने वहां पर बहुत ही फोकस करके बोला था। फर्स्ट लाइन मेरी यही थी कि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्री पर फोकस करना रहेगा। यस सुनो, फर्स्ट लाइन मेरी यही थी। आप वीडियो जाके देखेंगे, मैंने फिर बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने बोला था कि ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री और 3 डायमेंशनल दोनों को मिला के आप देखोगे तो 50% है आपका। अगर 2 टॉपिक करते हो तो आप मैथमेटिक्स के 50 पार्ट्स को कवर करते हो। फिर कैलकुलस, अलजेब्रा एंड वेक्टर एंड स्टैटिक्स, यहाँ से मेजर प्रॉब्लम्स थी। बाकी फिर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स और भी थी। अगर आप इन सबको इतना ही कर लेते तो आपका एटलीस्ट जो है वो गुड अटेम्प्ट हो सकता था। फिर मैं बात करता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये जो पेपर है वो है मेमोरी बेस्ड है, बिकॉज आप सभी को पता है
कि ये जो क्वेश्चंस है, ना ही ये ऑफलाइन पेपर कंडक्ट होता है और ना ही इसके कोई पेपर बाद में जारी होते हैं ना, रिलीज होता है। सो ये जो सारे पेपर्स हैं ये सारे के सारे स्टूडेंट्स के थ्रू ही पता चला है मुझे, जो कि मेमोरी बेस्ड है। तो मेमोरी बेस्ड में मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स सेक्शंस का, जेई पेपर 2A। सो यहाँ पर 20 एमसीक्यू थे और 10 एनएटी क्वेश्चंस थे आपके, और जिसमें मैं बात करूँ कुछ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ने बताए मुझे, 10, 30, 68, 130, ये एक आपका सीरीज चल रहा है, मिसिंग नंबर आपसे पूछा गया है यहाँ से, ठीक है। 20, 48 को आप देख सकते हो कि किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। फिर यहाँ से आ जाएगा हाउ मेनी टाइम्स 3 कम्स फ्रॉम 1 to 1000, ये किसका प्रॉब्लम हो जाएगा आपका, एपी का प्रॉब्लम हो जाएगा आपका, 3, 6, 7 है ना, 9, ये वाले प्रॉब्लम्स थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं उसके बाद एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड में यहाँ पर पैटर्न जो था वो चेंज था। पैटर्न क्या था यहाँ पर, चेंज था। आप लोग बता सकते हो आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं एप्टीट्यूड्स, कमेंट कर सकते हो कमेंट में कि भाई एप्टीट्यूड में आपने कितना कवर किया है और मैथमेटिक्स में कितने प्रॉब्लम्स आपने अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है। मैं था जिससे कि मैं ओवरऑल ऑब्जर्वेशंस कर सकता हूँ कि आपका जो कट ऑफ है वो कितना हो सकता है, ये सारी चीजें तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं कि एप्टीट्यूड आपने कितना अटेम्प्ट किया है और मैथमेटिक्स आपने कितना अटेम्प्ट किया, ओके। सो मैं बात कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पार्ट था आपका जो था विजुअल रीजनिंग एंड स्पेशल एप्टीट्यूड, यहाँ से 30 to 35%, और मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग 40 to 45, जनरल अवेयरनेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग 20 से 25%, 48, 48 पार्ट ए, ओके, ओवरऑल 48 ना। तो अगर मैं बात करूंगा अब लास्ट टाइम तक, आप देखते हैं लास्ट टाइम तक यहाँ जो प्रॉब्लम था मेनली प्रोजेक्शंस, ओके। लास्ट टाइम तक जो प्रॉब्लम्स बनते थे वो थे मेनली प्रोजेक्शन से। सो इस बार जो प्रॉब्लम्स बने हैं वो आपका मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम्स थे। हालांकि पेपर पैटर्न तो वही था, काफी इजी टू मॉडरेट था, बट लास्ट ईयर पेपर से अगर आप कंपेयर करेंगे, पास्ट ईयर पेपर अगर मैं कंपेयर करूंगा 2023 से, तो यहाँ हाँ बोल सकते हैं कि पेपर में जो है वो काफी चेंजेस देखने को मिले यहाँ पर, ओके। 48 अटेम्प्ट्स, ओके, हेलो है ना। उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि ये कुछ जीके के क्वेश्चंस थे, कि बिकॉज क्योंकि जीके जो है वो मेमोरी बेस्ड रहता है तो बच्चों को याद रहता है, बट मैथ्स की प्रॉब्लम्स और जो की विजुअल प्रॉब्लम्स होते हैं वो याद नहीं रहते, इसलिए मैं कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। जिसमें आपका था शालीमार बाग, हु बिल्ट शालीमार बाग, सो आपको पता है शालीमार बाग कश्मीर जहांगीर। सेकंड था आपका मोती मस्जिद, कुछ लोगों ने मोती मस्जिद लगा दिया होगा, ठीक है। मोती मस्जिद में कुछ लोगों ने क्या लगा दिया होगा यहाँ पर, शाहजहां, बिकॉज मोती मस्जिद शाहजहां ने वो कहाँ पर, आगरा फोर्ट में किया था। बट अगर आप देखोगे ये जो मोती मस्जिद यहाँ पर पूछा गया आपसे, रेड फोर्ट, वो है आपका औरंगजेब हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम अगर मैं बात करता हूँ कि व्हाइट इज है ना, व्हाट स्टोन इज यूज टू लोटस टेम्पल, सो जनरली आपको पता होगा आपका माउंट है ना, टेटली ग्रीस जो था उसी का यूज हुआ है, ये आपका लोटस टेम्पल। नेक्स्ट जो था आपका आर्किटेक्ट ऑफ सिडनी ओपेरा हाउस, सो याद रखना जॉन ऑवर्ग उड्सन, ये क्या थे आपके आर्किटेक्ट हैं सिडनी ओपेरा हाउस। नेक्स्ट है आपका हाउ इज लोड ट्रांसफर टू अर्थ, सो ग्रेविटी लोड पाथ, ओके। ये क्या है बेटा आपका ग्रेविटी लोड पाथ। सो आप देख सकते हो ना, दिस इज द ग्रेविटी लोड पाथ, इसलिए पिलर्स बनाए जाते हैं, सुनो जनरली आपने देखा होगा बिल्डिंग से रिलेटेड था आपका स्नो ग्रेविटी लोड पाथ। रूफ, द कंक्रीट मिक्सचर, तो आप देख सकते हो सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट, इन सब का मिक्सचर क्या होता है आपका कंक्रीट, जिसमें आपका एयर वाटर सैंड एंड ग्रेवल ऑल है ना, सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। नेक्स्ट लीड आपसे पूछा गया था, फुल फॉर्म ऑफ लीड अगर मैं बात करूं, लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरनमेंट एंड डिजाइन, ये बिल्डिंग्स को दिया जाने वाला एक सर्टिफिकेट है, किस बिल्डिंग्स को, ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम। नाउ दिस इज द ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम हो जाता है आपका। फिर जनरली नेक्स्ट प्रॉब्लम था एलिफेंटा केव्स, सो एलिफेंटा केव्स आपको पता है किससे रिलेटेड है, लॉर्डशिप। एलिफेंटा केव्स किससे रिलेटेड हो जाता है, डेडिकेटेड टू लॉर्डशिप, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट था, इजी प्रॉब्लम था, ओके। ये पेपर हम बोल सकते हैं कि इतना टफ नहीं था। हेलो बेटा, हेलो, ठीक, ओके। स्टोन कट अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क हैज कवर्ड स्टोन चैरियट, सो यहाँ आप देखोगे 12 पेयर थे। सो जनरली ये किसको, यहाँ प्रॉब्लम क्या है, स्टोन कट चैरियट व्हील कार्विंग आर फ्रॉम, सो कौन सा टेम्पल हो जाएगा आपका, सन टेम्पल कोणार्क, ओके। सो ये जो थी आपकी प्रॉब्लम्स थी आपकी एप्टीट्यूड्स वाले, आप अपना
बता सकते हैं कि कितना, है ना, आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया, या आपके कोई भी जो डाउट्स हैं हम उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आपको ड्राइंग का जो पार्ट है वो सर डिस्कस करेंगे। हम सेशन को फिर सर को हैंड ओवर करते हैं। ओके। तो दीपाली 45, आदित्य 44, सृष्टि 43, अंकित 48। ओके, सो ओवरऑल गुड अटेम्प्ट। अगर मैं बात करूं ओवरऑल अटेम्प्ट्स, बेटा आपको कमेंट करना है ओवरऑल अटेम्प्ट मतलब एप्टीट्यूड, है ना, एप्टीट्यूड प्लस जी, एप्टीट्यूड प्लस मैथमेटिक्स बोथ 260 इज अ गुड स्कोर, है ना। सो मैं सेशन सर को हैंड ओवर करता हूँ। ओके, 260 अंकित, गुड स्कोर बेटा। दीपाली 45 गुड ना, 45 प्रॉब्लम्स गुड स्कोर। अगर आपका 260 हो रहा है तो इजीली आप क्वालिफाई कर जाएंगे। 47। ओके। Hello, friends. Good evening. Well, I thank Jitin sir for having taken the first session, which was very important for all of you because it had um, maths plus the aptitude. However, equally important, although only 25% of the um, marking, but equally important was the session for or the part of creative. Generally, as you all know, that JEE exam has got um, a lot of weightage distribution. My belief that one can score from aptitude and math equally well. However, there will be a lot of difference between um, the ability of solving the design question, the drawing question. Friends, my name is Rajendra Bhatia, representing Creative Edge, one of the subsidiaries of Top Ranker, and let us analyze as to what was there in JEBR. You all know that there are generally two attempts, one which you have already given yesterday, and there will be equally good attempt somewhere in April. The dates are not yet announced. March or April, yeah. So JEE exam, joint entrance examination for Bachelor of Architecture, conducted by National Testing Agency NTA in India. Purpose: admission to the undergraduate program of architecture in various institutions. We will be talking about those institutions separately. Paper format consists of mathematics, aptitude, and drawing. Now these sections, the weightage are distribution, mathematics 25%, aptitude is 50%, but this is design aptitude. Remember that. You just now saw that there were questions on a particular monument. Now that monument, although it can be asked by any other um, competitive exam, but in architecture entrance, it is more towards the architectural monuments. Then drawing section, for which I have come to talk about this year's question in the paper analysis. B.Arch syllabus focuses on architectural and mathematical concepts. Drawing test evaluates candidates' visualization and drawing skill. Eligibility 10+2 with mathematics as a compulsory subject. Examination mode conducted in computer-based test, that is CBT mode. Friends, let us look into
what this has to, I mean, what value is it for the entrance in various government colleges. Colleges accepting JEE B.Arch scores. Now, this has been a little orthodox way of understanding that all the three SPs, SPA Delhi, SPA Bhopal, and SPA Vijayawada, they accept the scores of JEE B.Arch. IIT Kharagpur and IIT Roorkee also essentially require you to clear JEE B.Arch. However, they have got different ways of taking the student. Like they also want the student, only the IITs, they also want the student to pass out their JEE mains and JEE advance. Then only they start considering JEE B.Arch score, that is a paper 2 score. And despite all this, they also expect you to clear their AAT exam, which is conducted later on. Once you are falling into the rank, say thrice the number of seats, they will ask you to take up another exam, and that is AAT. Okay, then 9 NITs: NIT Bhopal, Calicut, Hamirpur, Jaipur, Nagpur, Patna, NIT Rourkela, NIT Roorkee, and NIT Trichy. All these, now this NIT Roorkee and IIT Roorkee, these are two colleges, right? So all these will accept JEE B.Arch score. They do not demand for NATA score. Let me tell you for your information, last year they asked um, all the private colleges also, like even leading colleges among the private, to accept the JEE B.Arch score as one of the criteria for admission. Before that, everyone had to clear the examination conducted by Council of Architecture, the examination of NATA. Now it is not that mandatory to clear the exam of once you have cleared JEE B.Arch. Now those things will actually come into existence when you start really looking forward for a college. That means once you have cleared JEE B.Arch, once you have cleared NATA, and then you are filling up different forms for admission. Any government college, you have to clear JEE B.Arch anyway. So let us look into this year's question. Once again, I remind you, once you have got a good score in maths and aptitude, it is the design score that you have to really um, bank upon or depend upon for your rank in the merit list. Because here lies a big difference between the two. I mean, the one who is clearing JEE B.Arch and is scoring a very high rank, and the one who is clearing rest of the subject but not able to clear or take good marks in the sketching part. Okay, so the question this year was create a proportional illustration based on provided reference image. This image would be small, or it was given small, employing black and white rendering technique. People who do not know what is rendering should know that it is just filling up the blank space in a sketch. It's called rendering. It could be, I mean, there are people who are practicing rendering with colors. Even my days, my younghood, a colored rendering would have been, I mean, my days of teaching in architecture college, a colored rendering was more preferred. However, now they want you to value the uh, tonal values of black color.
on white. So white is the negative space and the positive space is gray or black. Now you know that tone means gray. You write it GREY or GRAY, one and the same. So how much you can understand, like this is the middle tone, this is the dark tone, kind of a thing. Basically, if you can understand three values in a sketch, light tone, middle tone, and dark tone, you can do good. However, I always want my students to know three more values. One is a highlight. Okay, you can see the highlight here. Not only here, highlights are here, 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 like that. Then I say the light tone. But before that, can you ever find out a light tone? That is a tonal value between highlight and light tone. I call it as light tone. So two I have added on to light tone, middle tone, dark tone. I have added highlight and light tone, lighter than the light tone, between highlight and light tone. The third value is beyond dark tone. I call it as dark tone. Particularly in shadows, dark tone are there. You know, wherever dark tone is seen, no light is reaching. For example, this is DD tone, dark tone. Okay, you can find out dark, and middle tone here. Okay, we will more see as to how would be the answer. I hope everybody knows how to enlarge or present a proportionate picture to the smaller one given here by X and Y axis and the Z axis. You can enlarge or you can have a pure grid here, the proportionate grid divided into many sections and find out as to what would be your presentation on the given space in the answer copy. I'm sure you have done it. We are only analyzing it. This is an answer. By proportion, by grid, what I mean, your proportion of the hand cart, of the wheel to the human figure should not change in the enlargement. One. Two, the values that you have brought in. Now you cannot exactly do the shades, but the shading that you have done in the answer should be able to find out different object very clearly. It should not get mixed up. So answer will have a little lesser tonal values, but wherever it is dark, it has to have a dark tonal value. Wherever it is highlight, it should have the highlights. So proportionate figure, good psiography. Psiography is the science of light, shade, shadow, and the enlargement using X, Y, and Z axis or the grids, right? You can form the grids here. Now, yeah, you can say that, yes, it is computer based. So how to find out grids on your computer screen? Well, friends, that is what you can imagine. But on your paper, you can always draw very faint lines
so that you copy the image on your answer sheet fairly well. That is what you have to always remember. Okay? Can we move on to the second question? Question number 2. Envision yourself as a spectator at the football game. Illustrate the scene from your vantage point. Or sketch a sculpture incorporating musical instruments like drums, piano, flute, veena, mridang, violin, guitar, etc. Add shading and shadow to enhance the visual depth. Same thing what I said as sciography. Okay, so let's see. As far as my analysis is concerned, I like to show both the sketches to you. One of the spectators, that means you can expect you to be among this crowd, and here is a football game going on. To give the total view from a higher up, you should bring in case you expect some roof in the stadium. So here it is. Near figures are large and the distance figures are small. More detail you give, the examiner will like it. So that is one. Second is this. When they ask for a sculpture, that is, it's a three-dimensional um, sketching. I mean, a sketching of a three-dimensional object. So you could use maximum of those, a drum, a sitar, and tablas, and all that, the drums. And yes, you were supposed to give the shadow. In this sketch, the shadow is slightly lighter, has gone into a middle tone, maybe done it a little faster. I would have preferred the shadow to be darker and little more shades here. Three dimension is all about shade shadow. So that is all about analyzing the question, understanding the question. And as you know, JEE B.Arch has recently increased number in the sketching part. That is, out of 400, it is 100 marks now. Instead of one question they used to ask 2 years back, they are now asking two questions of 50 marks each. And they expect you to do a lot of details. So that is how you could go ahead doing it, and you must have done it by now, and you can well assess as to how much good have you done. Any questions, friend? I would be here for next 2 minutes to give you answer. However, if a question comes to you little later, I mean in your mind, and you want to join my um, upcoming courses, right now we have got a campaign for NIFT. Later on, we will have campaign for NATA and JEE B.Arch. NATA, has been announced very typically one examination every week, and you can give three. So in a year, so you can gear up with us. I know some of you who are doing your 12th, maybe just waiting for the examination to be over. But people who have already passed out can straight away contact us. 7676 564400 is the number. You can send a message, contact us. And yes, I'm sure everybody of you has already subscribed our channel www.toprankers.com or creativehedge.com. So friends,
any of your query, any of your question, or you want a help in solving um, your problems of these examinations, JEE B.Arch and NATA, and right now what is going on is NIFT, all this one place, Creative Edge by top rankers. So I just look into if there is any new question. There's a question, how much marks can be obtained at max in drawing? Somebody asking football का drawing दिखाएं. Both okay. Firstly, let me answer how many marks can you obtain. I've seen good sketches getting as good as 75 or maybe 80 out of 100 with all precautions taken, good sciography. However, um, it particularly depends on the section. Suppose an examiner is given 50 um, answer sheets to be checked. That examiner will set up a percentile of 100 percentile, which may be 75 marks, and the lowest marks, the and the rest of the 48 student will hang on in between the highest and the lowest percentile. Okay, so it depends on that one examiner who is getting those 50 copies. Other examiner may have a percentile set up to 80 and maybe 40. And that too, of course, demanding both the answers over there. So out of those 50 copies, they try to put the rest of them into those sections. That is one way of understanding the psychology of the examiner that day of exam. Somebody saying 85 in drawing, that has to be absolutely like an artist. There is a big thanks given to me for answering the question. And I think I have been honest in telling you how, if I were the examiner, how I would do. I cannot look into all the 20,000, 30,000 answer sheet. Whatever answer sheets are given to me, I will set the percentile into that only and give the standards to them. And as you know, by the way, um, there are not the marks given. The percentile is given in JEE B.Arch. So you have to remember that more you can score with a percentile, probably you could be surprised to see that you are at a 90 percentile or 95 percentile or maybe 100 percentile. But that 100 might have got a mark of 75 or 80. I quickly go back onto the um, this one asked by someone over there. So this is mostly the stadium because you are one of the spectators and you are looking into the football match. In a perspective, probably you may not be able to set up a lot of proportion, but that is okay. That is how it goes. Somebody saying that, have you ever been into uh, checking? No, I have always been a part of teaching, including teaching in architecture college, but checking all secrets. For today, you can know that I have never been into checking JEE B.Arch answer copies. Nobody will tell you that he or she has checked JEE B.Arch or any competitive exam papers. That is illegal. Chalo.
How many percentile will you get for 215 marks? Friends, percentile is every year's uh, job, and the highest is 100% and maybe lowest any percentile. So highest 100 percentile. You cannot know. It depends on how many marks on that particular year somebody is getting. Okay? Chalo, I think this is good for today. Any further queries? I've already told you the number 7676 564400. Thank you so much for being with me. Hope to see you. And do not forget to take the other attempt, JEE B.Arch, second attempt. Do not forget to take all the NATA attempts because you are safest. They are always now taking the highest score as your valid score. Thank you very much for being with me. Bye-bye.